ये पीछे उसकी फोटो है इनके बैठी नरसिंह स्वामी महाराज की जय। हो रही है Thank you very much for coming over here. So today, first of all, we'd like to thank the host, Dr. Ashok Kapoor and Sarita Kapoor for inviting Lord Damodara to their home. And we're also fortunate to have with us His Holiness Bhakti Narasimha Maharaj. I would request Ashok to introduce you. Please intro of Maharaj. शादी में वहीं करें और क्या Hare Krishna, Hare Krishna. करेंगे अगर सब परिवार को बुलाना Giving me an opportunity पार्टी को और क्या श्री भक्ति विघाना विनाशा नरसिम्हा स्वामी महाराज. Welcome, sir. Swamiji was initiated by Srila Prabhupada in London in 1971. A year later, he received second initiation. कोई भी जाता है उनका He has been preaching for over last 25 years in all these Asian countries such as India, Philippines, China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Thailand, to name a few. Through his years of preaching, he has given countless souls practical guidance and deep inspiration. Taking sannyasa in Mayapur in 1994 from Tamal Krishna Goswami did not mean much of a change in his lifestyle. Since Maharaja has always been strict in his sadhana, so his lifestyle remained the same even after sannyasa. Whoever gets to know Maharaja admires and respects his sincere and faithful practice of chanting the holy name of the Lord. बीच में एक His talk, Maharaja has been teaching with the MI since inception. So this is a great opportunity and privilege to be Prabhuji today to introduce continuation which is not an easy job. And sorry for I have to read it because it's very difficult for such a mighty personality even to name him. So I have done the introduction. Thank you so much, Maharaj. 12:30 बजे ही होते रह गए कपड़े चेंज करें तो बाय रोड गए और क्या वहाँ क्या उज्जैन गई है तो वहाँ मंदिर कोई नहीं है Recording in progress. Sound is volume is full. वो सही है इधर ये स्पीकर का वॉल्यूम Recording done. Om Ajnanatimmarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilutam Yena Tasmai Shri Gurave Namah.
लेकिन जाते हुए देखा है लेकिन जा रही है कुछ बच्चे सेलिब्रिटीज का बड़ा इलाका नहीं अच्छा somebody wait let me to participants and I'll put it to They're below mute on. You're below only. The button below. There's one button there. okay mute Yes. But unmute Maharaj. Yeah, he's unmute. Om Jnanatimirandasya Jnananjanasavakaya Aktorunmilitam Vina Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Pristane Bhutale Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyani Acharya Chakari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 So we're celebrating the auspicious occasion of Kartik, which we generally refer to as the month of Damodara, one of the names of Lord Krishna. तो हम ये शुभ महीने को मना रहे हैं, ये जो घटना शुभ घटना है बहुत इसको मना रहे हैं श्री दामोदर, और इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है और कार्तिक मास. So here we can see Damodar with Mother Yashoda, Lord Krishna in his form as Damodar with the belly bound with the rope. यहाँ पर हम देख सकते हैं कृष्ण को माँ यशोदा के साथ दामोदर रूप में, और कृष्ण का पेट रस्सी द्वारा बंधा हुआ है. This is one of the well-known pastimes of Lord Krishna, which is recorded in the scriptures, describing how Mother Yashoda was dealing with her mischievous son. तो ये भगवान की एक लीला है जिसको शास्त्र में बताया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार माँ यशोदा अपने पुत्र के साथ व्यवहार कर रही है. We know Lord Krishna can sometimes do things like he's got names like Makan Chor. He's famous for stealing the butter. And then another name is Ranchor. He left the battlefield. And so he gets names for things which are sometimes not really appreciated, which are not really glorified, but which we would think are bad things. तो इस प्रकार कृष्ण के अन्य नाम पढ़ते हैं, जैसे कभी उनको माखन चोर कहा जाता है, कभी रणचोर कहा जाता है. तो इस प्रकार से ये जो नाम पढ़ते हैं भगवान को, इसमें भगवान की सराहना नहीं की जा रही है, तो हमको इसमें भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है. हमको ऐसा लग सकता है कि ये तो गलत प्रकार के नाम है भगवान के. It's important, therefore, that we understand who is Lord Krishna, that he is not an ordinary person, but he is actually the supreme absolute truth. तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले समझें कि कृष्ण कौन है. ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण परम सत्य है. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna himself describes, he said, "The foolish mock at me, descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over everything." भगवान कृष्ण ही भगवत गीता में कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वो मुझे धिक्कारते हैं और समझते हैं कि मैं तो कोई साधारण व्यक्ति हूँ, उनके बीच में आया हूँ.
परंतु मेरी जो उच्च स्थिति है कि मैं सबसे दिव्य हूँ, सबसे ऊपर हूँ, उस बात को वो नहीं समझ पाते. Lord Krishna comes into this world to enjoy. He's the supreme enjoyer. Just as all of us, we also like to enjoy. We are made in a similar image to God. He is the supreme enjoyer. We are small enjoyers. भगवान कृष्ण इस जगत में आते हैं भोगने के लिए, आनंद पाने के लिए. जिस प्रकार से हम भी यहाँ पर आते हैं भोगने के लिए, आनंद पाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है और हम छोटे छोटे भोक्ता है. Lord Krishna is a Purush. We are actually Prakriti. Purush means the male. Prakriti is feminine. We are all feminine in relation to Lord Krishna. He is the enjoyer and we are meant for his enjoyment. We are meant to be enjoyed. तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, हम सब स्त्री हैं भगवान से हमारे संबंध में. तो भगवान भोक्ता है और हम भगवान द्वारा भोगे जाने वाले हैं, हम भोग्य हैं. When we are engaged in the service of Lord Krishna for his pleasure, then we also enjoy. Just like here, Mother Yashoda is tying up Lord Krishna. And Lord Krishna is enjoying actually this pastime. तो जब हम भगवान को आनंद प्रदान करने में लगते हैं, तब हमें भी आनंद अनुभव होता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माँ यशोदा लगी हुई है भगवान कृष्ण को बांधने के लिए और कृष्ण इसका आनंद ले रहे हैं. Lord Krishna comes to enjoy the relationship with his devotees, like Yashoda. Here, this lady who is tying Krishna is Mother Yashoda. She is the wife of Nanda Baba or Nanda Maharaj, and they live in Gokula, in Vrindavan. तो भगवान कृष्ण यहाँ पर आ रहे हैं आनंद उठाने के लिए, भक्तों के साथ जो उनका संबंध है उसमें आनंद उठाने के लिए. तो यहाँ पर आप जो महिला को देख रही हैं वो माँ यशोदा है. वो नंद बाबा की पत्नी है और वो रहती है वृंदावन में, गोकुल में. Lord Krishna appeared. We would say the birthplace of Lord Krishna is generally understood to be Mathura. That is the Janmastan. But after his birth, Lord Krishna was transferred over to Gokul, to the home of Nanda Maharaj. भगवान कृष्ण की जो मूल जन्मभूमि जानी जाती है वो है मथुरा, और उनके जन्म के बाद उनको स्थानांतरित कर दिया था गोकुल में, वृंदावन. Lord Krishna wants to come into Vrindavan to enjoy all the cows, to live in the home of Nanda Maharaj and be around all the cows and calves, with all the gofas and gopis, all the cowherd people. They're all very dear to Lord Krishna. भगवान कृष्ण वृंदावन में आना चाहते हैं सब गोपियां गायों के साथ आनंद उठाने के लिए. गोपियां और जो गाय हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है. Nanda Maharaj was keeping 900,000 cows, 9 lakh cows. So he had a big herd of cows. तो नंद महाराज के पास वो रखे होते थे 9 लाख गाय. बड़ा समूह था गायों का नंद महाराज के पास. Nowadays, if we hear someone's got 500,000, 50,000 cows, oh, you think, oh, so big a herd. But Nanda Maharaj had 9 lakh cows. तो आजकल अगर हम सुनते हैं किसी के पास केवल 50,000 गाय हैं तो हम बोलते हैं अरे इसके पास इतनी गाय, परंतु नंद महाराज के पास तो 9 लाख गाय थी. And Mother Yashoda, she had selected very special cow to keep some good milk to give to her son. और माँ यशोदा ने कुछ बहुत विशेष गाय रखी थी, उनका विशेष दूध अपने पुत्र को देने के लिए. Just like when you have a child, you like to give the best for your child. So Mother Yashoda wanted to give the best for Lord Krishna.
जैसे अगर आपके पास बच्चा होता है तो आप अपने बच्चे को सबसे उत्तम चीज देना चाहते हैं, उसी प्रकार से माँ यशोदा भी कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ चीज देना चाहती थी। Mother Yashoda would give special grass to the cows to get extra sweet and thick, creamy milk. माँ यशोदा विशेष घास खिलाया करती थी उन गायों को ताकि अच्छा तगड़ा दूध उसे गाय से प्राप्त हो। In Nathdwara, if you go to Nathdwara, have you ever been to Nathdwara? Yeah, if you go to Nathdwara, yes. So Nathdwara, the Lord Krishna's deity is there, Srinathji. And so Nathdwara, you'll see people often paint the pictures of Lord Krishna. And they will paint the pictures of Lord Krishna, and they'll use a very special yellow for the color of Lord Krishna's dhoti. तो आप में से कई लोग नाथद्वारा में गए होंगे, तो वहां पर आप देखते हैं बहुत चित्रकार है, जब कृष्ण की चित्र निकालते हैं बहुत विशेष कलर का पीला रंग उपयोग करते हैं उसकी धोती रंगने के लिए। So one of the artists there in Nathdwara, he told me how he got this yellow color for Krishna's dhoti. तो एक चित्रकार है नाथद्वारा में, उसने मुझे बताया कि कैसे उसको ये पीला रंग मिला कृष्ण की धोती रंगने के लिए। He said they would give the cow, they would only let the cow eat mango leaves, and the cow would eat the mango leaves for more than a month, and then they would collect the urine of that cow, and the urine of that cow would be the special yellow color, just like Lord Krishna's dhoti. तो उस चित्रकार ने मुझे बताया कि उन्होंने वहां पे रहने वाली गायों को 1 महीने तक आम के छिलके खिलाए उस गाय को, और जब वो गाय पेशाब करके 1 महीना गाय आम का छिलका खाने के बाद फिर उस पेशाब का जो पीला रंग होता था उससे भगवान का धोती रंगा जाता। So Mother Yashoda, she was not giving mango leaves, she was giving lotus flowers to the cows to get milk. तो माँ यशोदा आम के पत्ते नहीं देती थी, वो गायों को कमल के फूल खिलाया करती थी वो विशेष दूध प्राप्त करने के लिए। And this was the milk which she was keeping aside to give to Lord Krishna to ensure the good health of her son. तो ये वो दूध था वो अलग से निकाल के रखती थी अपने पुत्र कृष्ण को देने के लिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। It's unfortunate in this age, this Kali Yuga, this modern age, people are not very much aware of the value of drinking cow's milk. बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस कलयुग में लोगों को गाय के दूध पीने का क्या मूल है, क्या महत्व है, ये पता ही नहीं है। And sometimes they do just the opposite. Instead of drinking cow's milk, they will eat cow flesh. और कभी-कभी वो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, गाय के दूध पीने के बजाय गाय का मांस खाते हैं। And if you eat the meat, the flesh of the cow, it's the most sinful thing. It's the worst thing you can eat. Because sometimes people think, oh, this is very good for health. तो अगर कोई गाय का मांस खाता है, ये सबसे घोर घनिष्ठ पाप है, ये सबसे गिरी हुई चीज है कोई खा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते नहीं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। So we do try to inform people that if you want to benefit yourself, the best thing you can take is the milk of the cow. And if you can get the milk from cows which are protected and taken care of by devotees, that will be the best. तो हम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप गाय से लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका दूध पी के उठा सकते हैं, और अगर आप वो दूध So in our temples, like over in London, in the UK, we have a temple outside London, a place called Bhakti Vedanta Manor, and we have a Goshala there, a herd of about 40 cows. And the milk there is all what we call ahimsa milk, non-violent milk. तो लंदन से थोड़ा बाहर हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का
भक्ति वेदांत मैनर है और वहां पर हमारे पास गौशाला है और लगभग 40 गाय हैं और वहां पर जो दूध मिलता है वो अहिंसा दूध है क्योंकि वहां पर गाय पर कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती। So we want you know, if you go to supermarkets, you're not going to get a piece of milk. You should understand that is not really the best kind of source of milk. You have to get it from people who are really pious and who will protect the cow throughout their life. तो अगर आप सुपरमार्केट जाके दूध खरीदेंगे तो वो सबसे श्रेष्ठ दूध नहीं मिलेगा आपको वहां पे। आपको दूध तो उन व्यक्तियों से लेना है जो जीवन भर गाय की देखभाल करेंगे। So Mother Yashoda, all in India, in Vedic India, 5,000 years ago, there was no question of anybody ever killing a cow. तो वैदिक भारत में 5000 वर्ष पहले सवाल ही नहीं उठ सकता था किसी को गाय को मारने। Sometime after the departure of Lord Krishna, the ruler was Parikshit. Parikshit was the grandson of Arjuna, and he was the sole survivor from the Yadu dynasty. तो कृष्ण के यहाँ से वापस लौट जाने के बाद जो राजा थे वो थे महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित अर्जुन के पोते थे और वो इकलौते थे जो यदु वंशज से बचे हुए। So Maharaj Parikshit was ruling and he was traveling around the kingdom and he was shocked to find someone beating a cow. तो महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे और वो अपने राज्य में चल रहे थे और वो आश्चर्य में हो गए, उन्होंने देखा एक व्यक्ति गाय को मार रहा है। And Maharaj Parikshit immediately came ready to kill that person. और महाराज परीक्षित वहां पर तुरंत आए, तैयार उस व्यक्ति को मारने के लिए। He had never imagined that anywhere in his kingdom someone could do such a sinful thing. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके राज्य में कोई ऐसा पाप कर सकता है। Anyway, that's information which comes from the scriptures. Tonight we're speaking about this very special lila of Damodar, and we want you to understand the loving relationship which was there between Mother Yashoda and her son Krishna. ये सब बातें हमको शास्त्र से पता पड़ती हैं और आज हम बात कर रहे हैं इस दामोदर लीला के बारे में, जहां पर हम एक बहुत प्रेम का संबंध देख सकते हैं माँ यशोदा और कृष्ण के बीच। So when Lord Krishna comes in this world, his birth is not like our birth. He chooses where he's going to take his birth, and he chooses which own family he will come. तो जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं इस जगत में, उनका जन्म हमारे तरह सरल जन्म नहीं होता। भगवान खुद चुनते हैं कहाँ पर वो जन्म लेंगे और किसके घर में वो जन्म लेंगे। So when he comes, Mother Yashoda will be his mother. Mother Yashoda comes before Krishna, and she comes along with Nanda Maharaj. They take their birth before, and then they're ready to be the parents of Krishna when he comes. तो जब कृष्ण आते हैं उसके पहले माँ यशोदा आती है, नंद महाराज आते हैं और वो बनेंगे कृष्ण के माता पिता। तो इस प्रकार से कृष्ण के आने के पहले वो दो जन्म लेते हैं। And Yashoda is a great devotee, greater even than Lord Brahma, and greater even than Lord Shiva. Brahma and Shiva are the principal demigods in heaven, but Mother Yashoda's position is far above their position. माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण की बहुत महान भक्त हैं, ब्रह्मा जी से भी बड़ी, शिव जी से भी बड़ी। ब्रह्मा जी और शिव जी दो बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं हमारे जगत में, लेकिन माँ यशोदा की स्थिति उनसे भी बड़ी है। You see, women also have very great position in spiritual practice. तो आप देख सकते हैं स्त्रियों का भी बहुत विशेष स्थान होता है भक्ति के जीवन में।
What Krishna says, Striyo Vaishya Sata Sudras Devi Yanti Param Gatim. That even ladies and Vaishya and Sudra, they can all attain the supreme destination. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र स्तेति यान्ति परम गति कि स्त्रियां वैश्य शूद्र कोई भी हो वो परम गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं. So Mother Yashoda is taking care of Krishna. One day, Lord Krishna had come to her to drink her milk from her breast, and Lord Krishna had to, he was drinking her milk, but Mother Yashoda put him down to go and take care of the milk which she was cooking. तो एक दिन भगवान कृष्ण माँ यशोदा से दूध पीने आते हैं और माँ उनको दूध पिलाते दौरान उसको उतार देती है ताकि उस दूध का ध्यान रख सके जो वो पका रही थी कृष्ण के लिए. The milk was on the stove and it was boiling over. So Mother Yashoda had to go and take care of it. It was very special milk. तो दूध चूल्हे पे था और उबल रहा था और माँ यशोदा को जाकर उसका ध्यान देना पड़ा क्योंकि वो बहुत विशेष दूध था. But Lord Krishna was angry. He got angry because he thought, my mother's putting me down. She's not feeding me. She's not taking care of me. She's gone off to take care of that milk. And so this aroused the anger in Lord Krishna. ये देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए. उनको लगा माँ यशोदा मेरी परवाह नहीं कर रही है, मुझे छोड़ दिया है, वहां दूध को देखने गई है. तो इससे भगवान क्रोधित हो गए. Krishna is not really angry. He has everything. He is completely satisfied in himself, but he enjoys this pastime with his devotee. भगवान श्री कृष्ण वास्तव में गुस्से नहीं है, वो अपने आप में संतुष्ट है, उनके पास सब कुछ है, परंतु यहाँ पर वो ये लीला का आनंद ले रहे हैं. So while his mother went away, Lord Krishna thought what he could do, what mischief he could do. So he found a stone and he broke the pot, which Mother Yashoda had the churn butter in. And he began to eat the butter and he began to distribute it to all the monkeys. तो भगवान ने वहां पर सोचा कि अब ऐसे मेरी माँ चली गई तो मैं क्या शरारत कर सकता हूँ. तो जिस मटके में माँ यशोदा मक्खन तैयार कर रही थी कृष्ण के लिए, भगवान ने उसको तोड़ दिया, वहां से मक्खन लेके गए और बंदरों को खिलाने लगे. And then he thought, my mother's not going to be happy with me for doing this. So he thought, I better go away, I'll go and hide somewhere. फिर कृष्ण ने सोचा मेरी माँ खुश नहीं होगी ये जानकर जो मैंने किया है, तो बेहतर मैं भाग जाता हूँ और कहाँ जाके छुप जाता हूँ. So he moved into another room, and then after some time, Mother Yashoda came back, and she was shocked to see the pot of butter all broken, and the butter was all over the place, and Krishna was not there. So she thought, where did my son go? तो कृष्ण उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले गए. तो माँ यशोदा जब वहां आती है, वो आश्चर्य में पड़ जाती है देख कर के पूरा उत्पात मचा हुआ है, कृष्ण ने मटका तोड़ दिया है, मक्खन गिरा हुआ है. तो सोचती है और कृष्ण भी यहाँ नहीं है, तो सोचने लगती है कहाँ गया कृष्ण. So she happened to be carrying the stick. She had the stick which she was using for churning the milk into butter. And so she went to look for Krishna carrying the stick. And Krishna saw his mother coming carrying the stick. He pretended to become afraid and he jumped up and he ran away. He thought, oh, mother, don't beat me. तो माँ यशोदा के हाथ में एक डंडी थी जिससे वो ये मंथन किया करती थी, तो वो लेके कृष्ण के पीछे गई और कृष्ण ने जब वो डंडी देखा वो ऐसे प्रतीत करने लगा कि वो बहुत भयभीत हो गया है और भाग रहा है और अपनी माँ को कहता है वो मुझे मत मारो. So they were both running. Krishna was running, Mother Yashoda was running after him, trying to catch him. तो दोनों भाग रहे थे, कृष्ण भाग रहे थे और माँ यशोदा भी उनके पीछे भाग रही थी उन्हें पकड़ने के. The great yogis are also trying to capture Krishna. They're also, but they cannot approach even the lotus feet of Krishna. बड़े बड़े योगी भी कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के चरण कमल को पकड़ भी नहीं सकते. But because Mother Yashoda possesses love for Krishna, she was able to capture Krishna.
लेकिन क्योंकि माँ यशोदा को कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए वो कृष्ण को पकड़ पाती है. And then she thought, my son is always doing some mischief. If I don't do something, may go to the neighbors and do the same thing what he's done to me. He may go and break the neighbors' pots of butter. And I don't want the neighbors complaining about it. माँ यशोदा सोचती हो, मेरा ये पुत्र हमेशा शरारत करता रहता है. अगर मैंने उसे आज पकड़ के नहीं रखा, तो शायद वो पड़ोसियों के पास भी चले जाए और ऐसे वहां पर भी शरारत करे. अब तो मैं नहीं ऐसा चाहती हूँ, तो मैं शायद बांध के रखूं. And so that's why she got some rope and she tried to tie up Krishna. She thought, I'll tie him up to this mortar. You can see this mortar behind Krishna. तो इसलिए माँ यशोदा ने सोचा, मैं कुछ रस्सी लाती हूँ और कृष्ण को बांध के रखूंगी ये उटकल के साथ. आप यहाँ पर चित्र में उटकल को देख सकते हैं. But Mother Yashoda, when she brought the rope, it wasn't long enough. She couldn't tie it. She got more rope, but still it wasn't long enough. And she got more rope and more rope. She kept bringing more ropes. Every time, somehow the rope was not long enough. तो माँ यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी लाती है, लेकिन पहली बार रस्सी छोटी पड़ जाती है. फिर वो और रस्सी लाती है, फिर तीसरी बार और रस्सी लाती है, लेकिन जितनी बार भी रस्सी लाती है, रस्सी कम ही पड़ जा रही थी उसको बांधने के लिए. So this is Lord Krishna using his mystic power to bewilder Mother Yashoda. Lord Krishna has inconceivable potencies, and he can do these things. If someone wants to try to tie up Krishna, if they are not devotees, Krishna will never let them, no matter how much rope they have. तो भगवान कृष्ण के पास अन्य अचिंत्य शक्ति है. कृष्ण यहाँ पर अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं. और कृष्ण कभी-कभी ऐसा करते हैं और कर सकते हैं कि जब कोई उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, तो भगवान इस प्रकार अपने शक्ति द्वारा नहीं बांधेंगे. But Mother Yashoda, because of her devotion, Krishna allowed her to tie him up. परंतु माँ यशोदा उनके भक्ति के कारण कृष्ण ने स्वीकारा और उन्हें अपने आप को बांधने दिया. And this is how Lord Krishna got the name Damodara. और इसी प्रकार भगवान कृष्ण को ये नाम मिला दामोदर. And then there's another pastime which takes place once Krishna is tied up, because Mother Yashoda goes away to do some work, and while Krishna is tied to the mortar, he pulls the mortar between two trees and knocks over two trees, which reveals the form of two demigods. तो इसके बाद एक और लीला होती है. भगवान के बनने के बाद तो भगवान बन जाते हैं और माँ यशोदा दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाती है. तो भगवान रेंगते हुए जाते हैं इस उत्कल के साथ और दो वृक्षों को उखाड़ लेते हैं. यहाँ पर दो देवी देवता के रूप प्रकट होते हैं, नल, कुबेर और मणि. So these two demigods had been cursed by Narada Muni. But Narada Muni, when he cursed them, he also blessed them that in the future they would see the pastimes of Lord Krishna. ये दो देवताओं को श्राप मिला था नारद मुनि द्वारा, लेकिन जब नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया था, तब उन्हें वरदान भी दिया था कि भविष्य में वो कृष्ण से मिल पाएंगे. So it happened that these two demigods were freed from the curse, and they came to Lord Krishna. They bowed down and they offered prayers and they begged forgiveness for all their sinful activities. तो ऐसा ही हुआ. ये दो देवताओं को कृष्ण का दर्शन मिला और भगवान को देखा, प्रणाम किया और भगवान से माफी मांगी अपने पाप कार्यों के लिए. And Lord Krishna forgave them and sent them back to heaven, to their heavenly abode. भगवान कृष्ण ने उन्हें माफ किया और जो स्वर्ग स्थान से वो आए थे वहां पे वापस ले आए. So this is Damodar Lila. The Lord's pastimes are going on eternally. Right now, this Damodar Lila is going on in some other universe.
तो ये है दामोदर लीला। भगवान की लीला नित्य रूप से चलती रहती है। अभी इसी समय भी ये दामोदर लीला किसी तो ब्रह्मांड में चल रही है। We have to understand that the Lord's pastimes are going on eternally. Just like right now, Krishna is speaking also Bhagavad Gita in some other universe. हमें समझना है कि भगवान की लीला नित्य रूप से चलती रहती है। जैसे इस समय भी अब भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में बोल रहे हैं। It is just like a traveling circus. Sometimes the circus will come to one town, they will stay for some time, and then they'll move on to another town. ये एक प्रकार का चलता फिरता मेला है ना। मेले वाले आते हैं, कभी एक शहर में मेला लगाते हैं, वहां समाप्त करके दूसरे शहर में मेला रखते हैं। In the same way, Lord Krishna will come, and he came on this planet some 5,000 years ago. He performed his pastimes. He stayed on this planet for 125 years, and then after that, then he went to another universe. तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 5,000 वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में आए, यहाँ लगभग 125 वर्ष तक रहे और यहाँ के बाद दूसरे ब्रह्मांड में गए। And in this way, Lord Krishna's pastimes are going on eternally. और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चलती जा रही हैं नित्य रूप से। Lord Krishna is the supreme enjoyer, and he comes into this world with a mission, as described in the Bhagavad Gita. Paritranaya sadhunam vinaschaya chajuskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge. Right? So, millennium after millennium, the Lord comes. In order to give pleasure to his devotees, as well as to annihilate miscreants. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस प्रकार आते हैं ब्रह्मांड में और अपने लक्ष्य के कारण आते हैं, और उनका लक्ष्य भी वो भगवद गीता में बताते हैं। परित्राणाय साधुनाय और वो धर्म स्थापित करते हैं। इसलिए यहाँ आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, असुरों का वध करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए। So this Damodara Leela is remembered during this month of Kartik, and we do a little worship. We offer a lamp, usually some ghee lamp or a candle or something, and we offer it to the picture of Lord Krishna, just by, as you usually offer something in worship. तो ये दामोदर लीला इस कार्तिक महीने में हम इसकी उपासना करते हैं। आमतौर पे आप कोई छोटा सा घी का दिया लेते हैं, और जैसे आप कोई भी अन्य वस्तु भगवान के चित्र को अर्पित करते हो, इस प्रकार ये घी का दिया भी भगवान को अर्पित किया जाता है। And this is something which we do throughout the month, for the whole month. It's very, very auspicious, and anybody who does this kind of worship during the month of Kartik, they will get hundreds of times benefit more than any other time of the year. इस प्रकार से भगवान को दीप का दिया दिखाना ये बहुत शुभ, बहुत पवित्र, मंगल कार्य है, और इस महीने ऐसा कार्य किया जाए तो अन्य समय किए जाने से 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। And the other principle is it will help us to develop the habit of remembering Lord Krishna. और दूसरा सिद्धांत ये है यहाँ कि ऐसे करने से हम एक आदत विकसित कर सकते हैं भगवान कृष्ण की याद करने की। You do something every day, gradually becomes a habit, and you want to keep doing it. So we hope after this month of Damodara ends, which is in just a few more days, that you can also continue to worship Krishna. तो आप कुछ करते रहोगे 30 दिनों तक, तो वो एक आदत बन जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्तिक महीने के बाद भी आप सभी कृष्ण की उपासना करना चालू रखोगे। During this month of Kartik, people often make vows. Sometimes they make a vow like to be vegetarian during this month of Kartik. No meat, fish or eggs. तो इस कार्तिक के महीने में लोग अधिक
अधिकतर कोई वचन लेते हैं, कोई प्रण लेते हैं, जैसे कि कई लोग प्रण लेते हैं कि इस पूरे महीने हम शाकाहारी रहेंगे, मांस नहीं, मच्छी नहीं और अंडा नहीं. So once you do something for a month, then it can become a habit. You see, after the month is over, you may continue to be vegetarian. इस प्रकार अगर आप कुछ चीज एक महीने तक करो तो आदत बन जाती है, तो शायद एक महीने के बाद भी आप शाकाहारी ही रह जाओ. Our Hare Krishna movement sometimes holds scientific conferences. And in our center in Juhu, in Mumbai, we have an auditorium there. So some years ago, we held one scientific conference, and many scientists came from the Western world. And some of them were Nobel Prize winners. They were very prominent in science. तो हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना के सदस्य हैं. कभी कभी हम विश्व भर के वैज्ञानिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते हैं. तो इस प्रकार से ऐसा एक कार्यक्रम हुआ था मुंबई में जून में, और वहां पर कई वैज्ञानिक आए थे और उनमें से कई तो नोबेल पुरस्कार जीते हुए वैज्ञानिक भी थे. So one of the devotees was given the job of escorting one of these Nobel Prize winners, a big professor from California University. He was taking him to the airport, and he was accompanying him in the car, and he was talking to him and asking him how he enjoyed the conference. वैसे ही एक भक्त को उस मंदिर से ये सेवा मिली थी कि एक प्रोफेसर आया था कैलिफोर्निया से, उसको गाड़ी में बिठा के हवाई अड्डे तक छोड़ के आया. तो जब वो उसको गाड़ी में छोड़ रहा था तो भक्त ने उस प्रोफेसर को पूछा, आपको ये जो हमारा वैज्ञानिक कार्यक्रम हुआ था ये कैसा लगा? So the professor said, you know, one thing which I've learned from this conference, he said, I've learned that I can be satisfied on a vegetarian diet. तो उस प्रोफेसर ने कहा, इस पूरे वैज्ञानिक कार्यक्रम से अगर मैंने कुछ एक चीज सीखा तो वो ये है कि हम एक शाकाहारी आहार से मैं संतुष्ट रह सकता हूँ. We often find today that people think if they don't eat meat or fish, or they won't have enough protein, or they won't have energy. But this Nobel Prize winner, who was a very famous man, a professor, a big man, he had the food every day in our restaurant at the Govinda's, at the Hare Krishna temple there in Juhu, very nice restaurant. And he had meals there every day, and he said, I'm very satisfied with them. तो बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जितना प्रोटीन चाहिए वो सब नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेसर है कैलिफोर्निया से जो कार्यक्रम में रहे, और प्रतिदिन उन्होंने हमारे मंदिर में गोविंदास भोजनालय है, बहुत प्रसिद्ध है, वहां हर रोज भोजन किया, और जाते समय वे भी स्वीकारे कि वो एक शाकाहारी आहार से संतुष्ट हुए. We generally find that people who are not vegetarian, they don't know how to cook. They don't know how to cook, and they don't know the knowledge how to prepare different dishes, different preparations, which are very common in the Vedic culture. तो बहुत बार हम देखते हैं कि जो लोग मांसाहारी होते हैं उनको कैसे अच्छा शाकाहारी खाना बनाना है वो बात उन्हें पता ही नहीं होती, और ये तो हमारी वैदिक संस्कृति में मुख्य बात है कि कैसे आपको शाकाहारी से खाना बना सकते हैं. One of the very best cooks is Srimati Radharani. She's a very expert cook, and this is one of the qualities which attracts Lord Krishna to Srimati Radharani. तो एक सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ खाना बनाती है जो रसोईया है वो है श्रीमती राधा रानी, और भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का ये गुण बहुत आकर्षित करता है.
She was such a good cook that even Mother Yashoda would request her to come and cook Krishna. वो इतनी अच्छी खाना बनाती थी कि माँ यशोदा भी उनसे विनती करती थी कि वो आके कृष्ण के लिए खाना बनाए. Lord Krishna would go into the forest all day with the cows, and he would come back in the evening, and Radharani would be cooking all day to prepare his supper for him to come home. भगवान कृष्ण सुबह वन में जाते थे और पूरा दिन वहां बिताते थे और घर में राधा रानी आती थी, पूरा दिन उनके लिए पकाती रहती थी कि जब कृष्ण वापस आए तो आनंद से उठा सके. So actually, Radharani also had a blessing from a great yogi called Durvasa, and she had served this yogi very nicely. So he blessed her that whatever she cooks, it will always be like nectar. तो राधा रानी को भी ये वरदान प्राप्त हुआ था एक बहुत बड़े मुनि से, दुर्वासा मुनि से. उन्होंने उन्हें ये वरदान दिया था कि जो कुछ वो पकाएंगी वो अमृत होगा. So this is a very nice blessing to have. You want to, those of you who cook, who go into the kitchen, you would also like to get that blessing. एक बहुत अच्छा वरदान है पाने के लिए. आप में से जो भी कोई पकाता है तो ये अच्छा होगा कि जैसे आप रसोई घर में गए पकाने के लिए, आपको ये वरदान है कि जो आप बनाओगे अमृत होगा. Krishna consciousness is sometimes called the kitchen religion. कृष्ण भावनामृत को कभी-कभी रसोई घर का धर्म बताया गया. Because we're cooking every day for the deities. कि हम हर रोज भगवान के विग्रह के लिए पका रहे हैं. You go to any of our temples in the world, you'll see it throughout the day. They're making offerings, and so there are people in the kitchen preparing the different dishes. They're all offered to the deity, and then they're distributed. तो आप हमारे विश्व भर में कहाँ भी मंदिर में जाओगे, आप देखोगे दिन भर रसोई घर में कुछ न कुछ बन रहा है भगवान के लिए. पूरा दिन इस प्रकार बनता है, भगवान को भोग लगता है और फिर जो भी वो प्रसाद होता है उसे बांटा जाता है. So today we're offering lamps to Lord Damodara, and we're remembering all of his wonderful pastimes. तो आज हम भगवान दामोदर को घी का दिया दिखा रहे हैं और उसके अद्भुत लीला का स्मरण कर रहे हैं. At the same time, we will try to sing the nice song which glorifies this festival. उसके साथ साथ हमें बहुत अच्छा गीत गाने का भी प्रयास करेंगे जो इस लीला की महिमा का गुणगान करता है. Does everyone have a copy? Yeah. Yes.
Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya
Shri Radha Damodar ki खाली फ्रूट ही लेते हैं। एक कुछ छोटा फ्रूट दे दीजिए, हम लोग निकलेंगे। बताइए। Hare Krishna, anybody has got questions? Great opportunity. Maharaj can carry for all your doubts. Maybe we can distribute this. I think. I can distribute. Yes. Yeah. Oh, Krishna. Didn't come and have prasad.